हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लिसनिंग पार्ट 1 में कैसे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करें। तो ये मेरे पास कैम्ब्रिज की लिसनिंग है और ये सेक्शन 1 है जिसमें 10 MCQs है। इसमें 10 MCQs है। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में 10 आउट ऑफ 10 हम लोग कैसे स्कोर करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लेना है, ये 1 वर्ड है और 1 नंबर। हमको 2 वर्ड्स नहीं लिखने और एक नंबर से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। एट द बिगिनिंग वी हैव टू इमेजिन रेंटेड प्रॉपर्टी कस्टमर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स कस्टमर वांट टू rent something like furniture, house and something like that. Name of the customer is Stephen Godfrey and they will tell me about some example that number of bedroom they want is 4. Okay, and we have to imagine, हमको imagine करना है preferred location in the dash area of town। वो कुछ एरिया के बारे में हमको बताएगा कि किस टाइप का एरिया है, सेंटर एरिया है, मिडल एरिया, वो किसी भी एरिया के बारे में हमको बताएगा। हमको सिर्फ इमेजिन करना है। मैक्सिमम मंथ रेंट, मंथली रेंट मैक्सिमम कितने महीने तक उनको रेंट पे करना है, कितने महीने तक उनको रहना है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 महीने। हमको सिर्फ इमेजिन करना है। तो उससे होगा क्या, इमेजिन करने से हमको गैस करने में अच्छा रहेगा। लेंथ ऑफ लेड रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम मंथली रेंट कितना रेंट होगा, और लेंथ ऑफ लेड रिक्वायरमेंट मीन्स कितने महीने तक का इनको टाइम पीरियड चाहिए। स्टार्टिंग सितंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा वो। अभी इनके पास सब अलग अलग लोकेशंस है, एड्रेस है, रूम्स कहाँ पर क्या क्या है, कितना रेंट है उसका और क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ओकिंगटन एवेन्यू, इसके अंदर है लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, सेपरेट किचन और इसका मंथली एक्सपेंस है 550 रुपीज़। प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम देखनी है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लाइक रेफ्रिजरेटर है या नहीं है, गैरेज है या नहीं है, पार्किंग प्रॉब्लम, वो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करेगा। उसके बाद है मेड स्ट्रीट, यहाँ पर भी सब है, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम एंड ऑल। इसका मंथली एक्सपेंस थोड़ा हाई है, 580। अब इधर है क्या कि इधर कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही लार्ज है, लाइक फर्नीचर हो सकता है, लिविंग रूम, बेडरूम, यानी घर के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ही बड़ी है। हैमिल्टन रोड, लिविंग रूम है यहाँ पर, किचन है, डिनर एंड और भी कोई चीज़ है जैसे कि लाइब्रेरी हो गई या कुछ भी हो सकता है। इसका रेंट है 550। और प्रॉब्लम जैसे कि टू मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, वो आवाज़ हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है। और लास्ट है गिवन क्लोथ, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, स्मॉल किचन है। इसके अंदर हमको गैस करना है कितना मंथली रेंट रहेगा और फिर हमको उसके बारे में प्रॉब्लम बतानी है जो कि यहाँ पर कुछ है नहीं। तो चलिए पहले 1 to 8 कर लेते हैं। You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, how can I help you? Hello, I'm interested in renting a house somewhere in the town. Right. Could I have your name, please? Yes, it's Stephen Godfrey. And tell me how many bedrooms you're looking for. Well, we'd need 4 because I'm going to share the house with 3 friends. The number of bedrooms needed is 4. So 4 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 8. Good morning, how can I help you?
Hello. I'm interested in renting a house somewhere in the town. Right. Could I have your name, please? Yes, it's Stephen Godfrey. And tell me how many bedrooms you're looking for. Well, we'd need 4 because I'm going to share the house with 3 friends. Okay. There are several of that size on our books. They mostly belong to families who are working abroad at the moment. What about the location? It'd be nice to be central. Oh, that might be difficult, as most houses of that size are in the suburbs. Still, there are a few. What's your upper limit for the rent? We'd like something around £500 a month, but we could go up to £600 if we have to. But we can't go beyond that. Do you know how long you want to rent the house for? The minimum let is 6 months, as you probably realise. We're at college here for 2 years, and we don't want to have to move during that time if we can avoid it. Right. And how soon do you want to move in? All our lets start on the 1st of the month. Well, as soon as possible, really. So that means September 1st. Okay, let me have a look at what we've got. We have photographs of all the houses on our book, so you can get an idea of what they're like. There's this one in Oakington Avenue at £550 a month, combined living room and dining room with a separate kitchen. It doesn't have a garage, though you can park in the road. We'd prefer to have one if possible. Right. Then have a look at this house in Mead Street. It's got a very large living room and kitchen, bathroom, cloakroom. How much is it? That one's £580. It's very well furnished and equipped. It also has plenty of space for parking, and it's available for a minimum of a year. Oh, and there's a big garden. I don't think we could cope with that, to be honest. We'll be too busy to look after it. Okay. Then there's this older house in Hamilton Road. Living room, kitchen, diner, and it has a study. £550 a month. That looks rather nice. But whereabouts in Hamilton Road? Towards the western end. Oh, that'll be very noisy. I know the area. Yes, it's pretty lively, but some people like it, though. Well, what about this house in Devon Close? That looks lovely. There's a big demand for houses in that area, so prices tend to be quite high. But this one hasn't been decorated for a few years, which has kept the rent down a bit. It's got a living room, dining room, and small kitchen, and it's $595 a month. I think it would suit you from what you've said. It sounds fine. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 9 and 10. तो फ्रेंड्स हमारे 1 to 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं और ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है जिसके अंदर हमको इन सब में से कोई भी 2 चीज़ें चूज़ करनी है. विच 2 फैसिलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेवन आर ओपन टू द पब्लिक एट द मोमेंट. इट मीन्स ऐसी कौन सी 2 फैसिलिटी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेवन क्लोज के अंदर जो ओपन होती है पब्लिक के लिए एट द मोमेंट. म्यूज़ियम, कॉन्सर्ट हॉल, सिनेमा, स्पोर्ट्स सेंटर, स्विमिंग पूल. इन सब में से कौन सी चीज़ है वो. विच 2 फैसिलिटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेवन क्लोज आर ओपन टू द पब्लिक एट द मोमेंट. तो हमको वो पता करना है कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें डेवन क्लोज के अंदर जो पब्लिक के लिए ओपन होती है वो उस टाइम पर. ओके. Now listen and answer questions 9 and 10. Why is that part of town so popular? Well, there's a big scheme to improve the district, and it'll soon have the best facilities for miles around. What sort of thing? There's a big sports centre under construction, which will be very impressive when it's finished. In fact, the swimming pool's already opened, ahead of schedule, and it's attracting a lot of people. What about cinemas? Are there any in the area? The only one closed down last year, and it's now in the process of being converted into a film museum. The local people are trying to get a new cinema added to the scheme. I think I heard something about a plan to replace the existing concert hall with a larger one. Ah, that's due to start next year. Well, it sounds an interesting area to live in. Could I go and see the house, please? Yes, of course. That is the end of section 1.
You now And at the last moment he told that he want to go and see the concert hall, but at the before he told that concert hall will remain closed and it will be gonna open on the next year. So the answer is B. And if you will check the answer, all the answers are right. Like I will check it. At the first central 602 years. Garage is also right. Garden, study, noisy, $595. B and E. So we had scored 10 out of 10 in part 1. There are 40 answers. If you want to score 6 band, you have to score at least 23 marks in both listening and reading. And what if we score 10 out of 10 in part 1? Then it would get very easy for us to score more than 6 or 6.5. So that was a trick that I had told you. If you want to make me more videos like that, so please comment me below. I will help you.